बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एआई गपशप का सेशन ज्वाइन करने के लिए द the purpose of this session is to have some kind of a dialogue around AI क्योंकि आजकल ये बहुत hot topic चल रहा है not only in the US and in Pakistan but worldwide as well. तो हम लोग चाहते थे कि आपस में कुछ बातें कर लें, try to understand what is being done, what we can do in our personal and professional lives and what we can do for Pakistan as well. तो मैं शुरू में इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ चंद लोग हैं who will be running the meeting. सबसे पहले हैं खालिद अहमद, ही इज़ लिविंग इन टोरंटो कनाडा. वो पाकिस्तान से हैं और उन्होंने पाकिस्तान में ही अपनी कॉलेज किया और फिर आगे टोरंटो में कॉलेज किया. He's been in the IT field for more than 30 years and he's one of the founding members of Aspire. फिर खुर्रम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं कार्डिफ वेल्स यूके से. Khurram has been very instrumental in Aspire as well. He's from Pakistan and इनके main focus है entrepreneurship, especially in branding and marketing. And he's one of the founding members for Aspire as well. The third person of the panel is Kashi Ahmad, commonly known as Kashi. He's from Dallas, Texas. Or Kashi was one of the very first founding members of Aspire before it was called Aspire. So I'll say the first one or two people in the group, that's Kashi. और वो भी technology की side पे हैं, and he's been very involved with the use of AI in industry and even previous to AI use of technology in enterprises as well. तो आप लोगों को जैसे पता है Khalid Ahmed will start as a moderator. वो छोटी सी presentation करेंगे and then he'll loop in Kashi and Khurram. But before we go there, we have a message from Anwar Khan, who's the vice chairperson of Aspire Global. So Anwar bhai, you had a few words to say. Can you please go ahead? So thank you, Yousuf. तो मेरा जो है दो मैसेजेस हैं. एक तो ये कि पर्सनल मैसेज ये है कि ज़ाहिर है AI such a important, such a fundamental technology is going to add into every aspect of our personal and professional life. So this initiative, as you guys have taken, Yousuf and Khalid, तो आप और सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो I think it's a great initiative. I fully support that. At the same time, second message I want to give is from Hassan Sayyed. He was planning to join, however, he's not feeling well, and he just sent a message saying that I really wanted to join, I could not join, but however, if you could deliver this message that as on the Aspire platform level, we had a discussion at the board meeting that we need to put together a think tank on AI and create multiple initiatives to help out various different category of information seekers or AI जो जानना चाहते हैं, चाहे वो students हों, चाहे वो professionals हों, चाहे वो हम जैसे हों और जो प्रोफेशन से आगे भी निकल गए. तो इसमें है तो इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है. तो सरफेस को खास तौर पे यूसुफ और खालिद से बात हुई थी कि कैसे जो है वो सेक्शन पे कर सकते हैं. तो I fully support that thing as a board member as well, as a founding member, as a personal level as well, and Hassan Sayyid also thinking the same way. So please continue your effort. Very well and good initiative. Good luck to you guys, and hopefully some tangible action items comes out, and some obviously initiative that get taken on the training side. With that, please continue. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई. I know you are on your way to the airport, so if you do drop off before we end the meeting, recording available होगी, आप please recording देख लीजिएगा. So the agenda, the way we are going to move through this meeting is Khalid is the moderator, so he'll start. First half, around 30 to 40 minutes, he will be describing AI and also interacting with our panel members, Kashi and Khurram. And then we'll open the floor for questions and comments. क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत से लोग जिन्होंने अभी join किया है, they have experience with AI, and we would love to hear from you guys as well during this meeting. एक request है
Okay, before Khalid starts, can everyone put themselves on mute so that we can have a smooth transition? Chale Khalid, it's all yours. Please go ahead. Thank you. Let me share my screen. So let me know when you guys see my screen. हाँ ये पॉपअप हो रही है अभी आहिस्ता से. Okay. Yes, it's on. Okay, good. So just to start के imagine करने की जरूरत है कि भाई हमारे पास एक क्लोजेट है, उसके अंदर इस तरह से कपड़े पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि काश कोई रोबोट हो जो इस कपड़े को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले, इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर ले जैसे हम चाहते हैं. तो मतलब इसने बड़ा खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया. एक और एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि भाई अगर हम हमारे घर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं और उन सबको जो है हमें कॉफ़ी जो है मुख्तलिफ तरीके के वो पीते हैं, कोई एस्प्रेसो पीता है, कोई कैपेचिनो पीता है, कोई ब्लैक कॉफ़ी पीता है, और रोबोट जो है वो उनको उनकी मर्जी से दे रहे हैं. तो ये सब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कम्प्लेक्स एल्गोरिथम है और फंक्शंस के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फंक्शन कर रहा होता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोडक्ट्स जो हैं स्मार्टफोन्स हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, स्मार्ट कार्स जो है टेस्ला है उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वीडियो गेम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बैंक इस्तेमाल करता है, सर्वेलेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट इज द एआई एज द कोर? अगर हम इमेजिन करें कि एक रोबोट लेते हैं जो हमारी लैब है, उसको लेके हम एक फील्ड में डाल देते हैं, तो फील्ड में डालने के लिए उसके पास जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखते हैं कि उसमें 3 पैरामीटर्स हैं, लाइट्स हैं, लैंडस्केप है, और डायमेंशन ऑफ उसकी डायमेंशंस ऑफ द लैंड्स हैं. तो ये जो लर्न कर रहा है रोबोट, और लर्न करने के बाद जो है फील्ड के अंदर जिस तरीके से वो चलेगा या उसके अंदर उसको मुख्तलिफ चीज़ों को फेस करेगा, दैट इज कॉल्ड ए जनरलाइज लर्निंग. हम इसको आगे देखते हैं तो मिसाल के तौर पे यही रोबोट जो है आगे आके फेस करता है कि उसको एक तरफ रास्ता नजर आता है कि एक तरफ रॉक्स हैं और एक तरफ जो है वो पेव रास्ता है, तो वो कौन से रास्ता लेके जाएगा. तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको एक पेव रास्ते पे चला जाता है. तो उसका मतलब होता है कि दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द रीजनिंग एबिलिटी. तो रीजनिंग एबिलिटी के बाद जो है और आगे थोड़ी देर के लिए जाता है तो उसको जो है वो स्ट्रीम ऑफ वाटर या रास्ते में पानी है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है. लेकिन अगर उसको कोई ऐसी चीज दे दी जाए, जैसे कि ये बिल्ड करके उसको दे दिया जाए कि भाई ये चीज है तुम्हारे पास एज एन इनपुट, यूज करो इसको, तुम क्रॉस कर लो. तो ये जो है गिवन इनपुट एंड फाइंड द सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम अगर उसको दिया जाता है रोबोट को, तो इट्स कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. So these are the 3 capabilities robots, which is generalized learning, reasoning, and problem solving skill, is generally called the artificial intelligence. So that's what is the capability of the robot is. So अगर हम ये देखते हैं कि 3 capabilities, if the ability of to adopt, ability of the reasoning, and ability to provide solution is called the artificial intelligence. Now we are getting into the 2 types of broader categories of the artificial intelligence. अगर मैं तेज हूं तो मुझे बता दीजिएगा. I'm trying to make it as fast as possible, so everyone is okay with that my speed, or you want me to slow it down? हाँ तो खालिद जरा सा हल्का सा स्लो डाउन कर दें. अच्छा, हल्का सा, sorry. So there are 2 types of categories: the weak AI and the strong AI. The weak AI is as simple as runs a program which is trained to. For example, अगर सबको मालूम है AlphaGo है. AlphaGo जो है वो चेस प्लेयर्स गेम्स था जो क्रिएट किया गया था, जो चेस प्ले करता था. आई थिंक इट वाज 2017 इट्स वन द गेम. एंड एलेक्सा सबको सब मालूम है कि घर में एलेक्सा इस्तेमाल करते हैं. तो एलेक्सा इज ट्रेन टू डू सर्टेन वर्क्स. फॉर एग्जांपल हम उसको बोलते हैं म्यूजिक प्ले करो और लाइट बंद कर दो, लाइट खोल दो. लेकिन वो काम कर सकता है एलेक्सा जिसके लिए हमने उसको ट्रेन किया. सॉरी, वो काम कर सकती है. इट्स अ फीमेल वॉइस. एंड देन चैटबॉट्स, सबको मालूम है कि चैटबॉट इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे वेबसाइट के अंदर. जो है वो चैटबॉट है जो कि ऑटोमेटिकली आप किसी वेबसाइट के ऊपर आप जा रहे होते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देता, हाउ कैन आई हेल्प यू. तो आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो वो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. तो इट मीन्स इट्स बीन ट्रेन टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स. एंड देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एआई. तो स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर आपको पता है कि प्रोसेस ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस. तो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस से जैसे हमने भी रोबोट की एग्जांपल दी थी कि एक एबिलिटी है, तो वो एबिलिटी इस्तेमाल करता है वो 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, अडॉप्ट
and the third one is problem solving. So that's the process. It's process like a human like intelligence. So उसके examples ये है कि OpenAI GPT-3 अगर आप लोगों ने अभी example के तौर पे बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं GPT-3, तो OpenAI ने निकाला है, इसके पास 3 अभी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये जिसको आप जनरल पर्पस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, and then there is an API also available and it can draw pictures as well. And the other example is the robots exist in fictions as of now. So अभी जो robots हमारे पास हैं, जो हम fiction movies में देख रहे होते हैं, उसकी जो capabilities है, it's a kind of a strong AI, but there are certain robots that is being built, जो कि अभी जिसको हम कहते हैं ना कि इस स्टेज पे नहीं है कि जो लोग जो है उसको अपने घरों में इस्तेमाल करने लगे। और तीसरी जो थर्ड एग्जांपल जो है वो स्ट्रॉन्ग एआई की जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, जैसे कि हम टेस्ला के अंदर देखते हैं, तो टेस्ला जो है वो ड्राइव कर रही होती है, उसके अंदर अभी जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो सेल्फ लर्निंग एज वेल। मिसाल के तौर पे जैसे हम लोगों के पास यहाँ पर जो है वो राउंड अबाउट है, तो राउंड अबाउट पे अभी टेस्ला जो है वो फुल्ली ऑटोनोमस वे पे और राउंड अबाउट को टेस्ला क्रॉस नहीं कर पाती, उसके अंदर अभी तरह से जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन असिस्टेंस की अभी भी जरूरत है, लेकिन इज स्टिल लर्निंग, is going through the process, and then still self-learning and then improving its ability to drive by themselves. So, and then there's a two terminology that's been used in artificial intelligence, is the machine learning and the deep learning. So machine learning के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, so provides a capability to learn from data and experience, and then the deep learning is a subset of a machine learning. So it's kind of a like some कहते हैं कि it's a way it's inspired by the human brain. So the how the human brain functions, so that's what the deep learning is. तो जो आप भी ज्यादातर जो चीजें आप देख रहे होते हैं, तो that's a kind of a deep learning. And even जो chat GPT है, इसको अगर हम generalize क्या बोलते हैं इसको हम pre-configured, मैं हमेशा इसकी भूल जाता हूँ, and then transformer. So this is what it is. I'm going to go into a so it's a very high level example that I have given, and then I'll get into a demo where I created a demo. I'm going to be using the OpenAI APIs to showcase some of the use cases of the artificial intelligence. So one of the use cases that I'm going to be showing it to you is we will ask the OpenAI to draw a picture of a cat or something that I want, and then I will ask AI to convert the voice, जो वीडियो ऑडियो जो है वो सुने, लिसन करे, एंड उसको जो है वो ट्रांसक्राइब, उसको ट्रांसलेट कर दे इंग्लिश के अंदर. So those are the two examples that I'm going to be showing off. So can you guys see my screen where it's running an application? It's running the Python code. Yes, yes. Okay. So don't worry about it. अगर आप इसके में जरूरत पड़ी तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ. तो मैं इसमें OpenAI की APIs यूज कर रहा हूँ. So these are all the libraries that I am installing in my Colab lab. Once it's installed, then I'm going to be able to use these libraries for my application. And then if you look at this line of code, it's actually connecting to my Google Drive, and it's going to extract of audio file from my Google Drive, and then I'm going to be listening that audio file and then converting that audio into a text file, text information. So this is an example of the API that is going to create an image. So what I'm asking to create an image is the prompt that is provided here, a white CMC angry cat. So अगर हम इसको simple जो है कोई भी कर लें, angry cat अगर मैं इसको मैं दे रहा हूँ, तो it is going to create an angry cat. So अगर आप इसको देखें तो ये आपको एंग्री कैट की पिक्चर्स जो है उस एपीआई के जरिए जो है OpenAI के तरीके से एंग्री कैट की पिक्चर मुझे दिखा दी. अगर मैं इसको कोई और कहूँगा, एंग्री कैट की जगह हैप्पी कैट कर दूं, तो हैप्पी कैट दिखा देगा. तो ये हैप्पी कैट है, एग्जाम्पल है. ठीक है. इस तरह से मैंने ऑडियो की आपसे बात की थी कि ऑडियो जो है ये मेरी एक ऑडियो फाइल है, हार्वर्ड की है.
इस ऑडियो फाइल को, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको दिखाऊं, लेकिन ये अगर ये रीड कर रहा है ऑडियो फाइल को, और रीड करने के बाद जो है it's showing the stale smell of old beer lingers, so it's basically converting and transcribing that audio file into the text. तो इसने text में इसको convert कर दिया है completely. ठीक है, जो एक्चुअल मैं चीज दिखाना चाह रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, that's what it's going to take some of the time. So उसके अंदर फिर मैं एक YouTube की वीडियो को शो करूंगा, और उस YouTube की वीडियो को, उर्दू वीडियो को मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ड्यू टू द टाइम लिमिटेशन, एंड देन व्हाट आई एम गोना बी डूइंग इट इज गोना बी कन्वर्टिंग दैट यूट्यूब वीडियो उर्दू को इंग्लिश में, वो ऑटोमेटिकली उसको वो ट्रांसलेट कर लेगा। लेकिन इट कैन बी जो टेक्नोलॉजी या टूल अवेलेबल है कि वो इसको जो है ऑटोमेटिकली आप इसको उस जो रियल टाइम जो है वो आप ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, और उसको वॉइस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन still they are all in the lab yet, it's not in productionized. It's a little bit slower, but hope it should run quickly. In the meantime, what I can do is I can show you this YouTube video while it's running. आप लोगों की YouTube वीडियो की आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही, और उस No. जूम की No. सेटिंग्स होती हैं तो उसकी वजह से आवाज नहीं आती। तो अभी आ रही है नहीं आ रही है मुझे बताएं, या मैं इसमें सेटिंग करूं? Zoom, share you have to set the sound to play also. अच्छा, what has happened? So ये एग्जाम्पल है, सॉरी। इमरान खान ने जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह की तलाशी की मशरूत इजाज़त दे दी है। इमरान खान का कहना है कि पुलिस के 4 एहलकार सर्च वारंट के साथ तलाशी लेने आ सकते हैं। तलाशी का अमल मीडिया की मौजूदगी में किया जाए। मजीद बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अली वकार से। अली वकार, क्या मालूमात है आपके पास, इमरान खान का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इमरान खान ने जो है वो अपने घर की तलाशी, जमान पार्क की तलाशी। तो मैं सिंपल से एग्जांपल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद, बट दिस इज वन इट दिस एग्जीक्यूट। तो आप ये उर्दू की यूट्यूब की वीडियो है, इसको ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा आपके लिए। Sometimes it gets slower. I should have run it and then execute it. तो बेसिकली जब तक भी रन कर रहा है, इट्स लिटिल बिट स्लोअर, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लोर पर रन कर रहा हूँ, अपने लोकल मशीन पर रन नहीं कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग दैट लॉन्ग। तो इसमें सिंपल ये है कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस यूट्यूब वीडियो को, और यूट्यूब वीडियो को कन्वर्ट होने के बाद जो है इसको मैं ऑडियो में ये कन्वर्ट करता है। ऑडियो में कन्वर्ट करने के बाद ये क्रिएट अ फाइल, एंड देन आई बेसिकली गोइंग टू ट्रांसक्राइब इट इनटू एन ऑडियो फाइल। तो ये प्रीवियसली जो आप रन किया था, तो इसने ये एग्जांपल है, so that what is running, or it's run already, good, all right, so that's good. So now आपने ये सुना था, मतलब इमरान खान की मुताली थी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। Why is that? No. Did I miss this one? Okay. Hold on a second, sorry. सर ये टूल कहीं पॉलिटिकल फेवर तो नहीं कर रहा? नहीं, it's not giving me. It's not that intelligent. नहीं, it's not that intelligent. YouTube is not defined yet. Why is that YouTube is not defined yet? I think did I miss this? I might have missed it, because what is happening is, okay, sometimes when I scroll it quickly, I might have missed something.
It's running now. Good. It's little bit slower, but it is going to, आपने अगर इसको थोड़ा बहुत hear कर लिया उर्दू के अंदर, तो at least you will be able to see the translation is English automatically. लेकिन इसकी जो powerful है, जो मुझे पसंद आया था, जो मैं showcase करना चाह रहा था, वो ये है कि it's a real time doing it, and it's a very powerful tool to use it, and there are a lot of use cases that can be used to do that. Yeah, that's amazing. If it is real time, and then simultaneously you see both the languages, that's incredible. Yes. Yeah. इसमें इसी तरह से इमेज का था, लेकिन चूंकि मैं अभी वीडियो यूज कर रहा हूं, तो वो इमेज के लिए मैं अपना कैमरा यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कि मैं उसको बाद में भी दिखा सकता हूं। तो वो इमेज आप यूज कर देखें, आपने देखा है ये आ गया, इमरान खान हैज गिवन परमिशन टू सर्च रेजिडेंट इन जमान पार्क, एंड इमरान खान सेज दैट 4 पुलिस ऑफिसर्स कैन कम टू सर्च विद सर्च वारंट। तो आपने जो सुना है वो इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। कैन यू गाइस सी दैट इन? Yep. Excellent. So Khalid, दो questions हैं इसमें. I think this is very helpful to understand. एक तो ये कि ये ओपन एआई की APIs जो हैं, ये कहाँ पे अवेलेबल हैं और कैसे हम उनको देख सकते हैं कि कौन सी हमारी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, कौन सी API अवेलेबल है, नंबर 1. Number 2 is just number 2, just a general question. These open AI resources कौन ओन करता है डाटा सेट्स को, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंट डिसीजन कर पा रहा है एआई सिस्टम जो है? अच्छा, तो ये मैं इसको पैनलिस्ट पे अपने छोड़ दूंगा, ठीक है ना? सो दे गोना बी एक्सप्लेनिंग देम। सो ये ओपन एआई जो है, आप सब लोगों को मालूम है, जिसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट इज चैट जीपीटी जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो सो दैट्स व्हाट इज, आई एम गोना बी लीव दिस टू पैनल टू डिस्क्राइब द ओपन एआई इफ दे हैव टाइम। तो जिस चैट जीपीटी इज रेफर्ड एज अ जनरेटिव एआई, हां, so what does that mean, generative? अच्छा, ठीक है, तो मैं अच्छा इसको मैं छोड़ देता हूँ अपने खुर्रम और काशी के ऊपर, दे गोना बी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, बट चैट जीपीटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओपन एआई, ठीक है? और ये इसके अंदर जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो लाइब्रेरीज में यूज कर रहा हूँ, वो ओपन एआई की एपीआईज यूज कर रहा हूँ, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है ओपन एपीआई की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसमें ओपन एआईज के अभी तक तो फ्री हैं, लेकिन बाद में हो सकता है कि इसके एक सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाए जिसके जरिए उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि वो डेवलपर लाइसेंस है, तो मैं ओपन एआई जो भी लोग इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर सिंपल तरीकेकार ये कि आप इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन एआई के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करें कि मैं यूज करना चाहता हूं, तो वो एक की जनरेट करेगा। तो ये की है जो सिर्फ मेरे लिए स्पेसिफिक है, तो जो भी आदमी रजिस्टर करेगा उसको ये की मिलेगी, तो वो की यूज करके वो कोई भी एपीआई को कॉल कर सकता है। तो व्हाट आई एम डूइंग ऑल दिस हियर इज कॉलिंग दैट एपीआई। सो एपीआई के एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये जो है एंड पॉइंट्स है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक इमेज जनरेट करने के लिए मुझे ओपन एआई को बताना था, तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस ओपन एआई एंड पॉइंट्स, एपीआई एंड पॉइंट, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस है, और इंस्ट्रक्शंस है, जैसे मैंने उसको प्रॉम्प्ट कहा कि व्हाइट हैप्पी कैट एग्जांपल के तौर पे, ये इसका प्रॉम्प्ट है। तो उसमें जो आप टाइप करेंगे प्रॉम्प्ट के अंदर, तो वो उसी तरीके से ये इसको आप पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो आप बता सकते हैं, जैसे मॉडल है, तो ये मॉडल जो उसका एआई का जो मॉडल है उसका नाम है। तो ये सारी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ओपन एआई के अंदर मिल जाएगी। तो आप नंबर ऑफ इमेजेस बता सकते हैं, आप कितनी चाहते हैं, आप उसके साइज बता दें। तो मैक्सिमम अभी जो साइज वो दे रहा है 1024 बाई 1024 देता है। और इसी तरह से रिस्पॉन्स फॉर्मेट आपने देखा यूआरएल है। तो हमने इस एपीआई को कॉल किया, तो आपने देखा था इसने एपीआई के ये जो है यूआरएल जनरेट कर दिए। क्योंकि मैंने उसको यूआरएल के लिए कहा, तो उसने यूआरएल जनरेट कर दिया। आप इस यूआरएल को क्लिक करेंगे तो ये आप इमेज देख रहे थे, ठीक है? I'm not sure whether that answered your question or not, but if you wanted to go further. No, this helps. Okay. So basically, if I summarize, I can go to OpenAI website, can find out what are the different APIs or different models available, number 1. Number 2, I can request for the OpenAI key that is assigned to me only, and then I can write the code to invoke exactly. Okay, got it. Thank you. तो अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस है, मॉडल्स है, यानी कि अगर आप ये जो मॉडल्स है, वी वर टॉकिंग अबाउट द विस्पर मॉडल। सो विस्पर मॉडल जो है वो ऑडियो के लिए है, और विस्पर जो है ये फ्री
ओपन सोर्स में आपको इसका पूरा मॉडल मिल जाएगा. You can use that Whisper model. So that's what the OpenAI has been using. It's open source version of the Whisper. So that's what they are telling you, this using this open source version of the Whisper model. So ये model already to train है. So हमारे पास इतना time नहीं है कि we can go into that detail and discuss it, how to train the model. But there is a way you can do it yourself. Instead of using their version of the model, you can have your own model created. So those are the things, but it's more like a deep dive. I think that's very helpful. If you could just later on after the call refer to any example where you can create your own model and how to do that thing, just give a reference, that would be helpful. So sure, one is to use existing model. The number two, if you are looking for seeking for some specific use case and you want to build your own model, and over time build the data set again against that model, how to do that. If there's a way high level example is being given, that would be really great. No worries. Thanks. Thank you for the question, and I think that's what I wanted to show as a showcase, and I'm going to open up the forum for my friends Khurram and Kashi. So Khurram, I will start with you. तो आप माशाल्लाह काफी experience AI में आप काम कर रहे हैं. So what do you use AI mostly as an entrepreneur, and then other things, any case study or example that you can share with us, and what are the development that you've been doing it? जी शुक्रिया Khalid bhai. I think it was an excellent demo आपने जो show किया था. It has so much potential as well. Assalamu alaikum. Basically मेरी जो my whole understanding has been, or experience has been, that I've been deep into this AI prompt engineering as well. So I've already created a database and stacked for more than 2,000 prompts, and I've been stacking onto it industry wise. मेरा जो core था, जिस आपका technical है, काशी भाई का software base होगा, I think मेरा जो core focus था, it was how we can make AI to use as more productive, basically, for my clients, for my business, for my agency, and anyone basically, in times of saving money, saving time, and improve content quality and enhance creativity. Basically, that was my core focus initially. There are a lot of more things that we can get into, but आज मैं थोड़ा सा high level पे ही रहूँगा. So to give you an idea of that, जिस तरह AI होता है artificial intelligence, then there is a human intelligence. AI will grow as much as जितना human intelligence, जैसे खालिद भाई ने भी कहा कि जितना उसको train करेंगे, basically. So in any field, this is how ChatGPT will be going on. And at the moment, there are 5 things they are using. Text to text, which is Grammarly use कर रहा है APIs के साथ. To answer Mohammed Anwar bhai's answer about AI, when you register with OpenAI, आपको 3 से 5 each person, I think at the moment they allow you to create those API keys. So I would suggest that you guys be very quick to register at least 1 or 2 emails, because they are looking to stop with the paid version as well. So they are quite slow in giving out as well. Khurram, thanks. What do you mean by 1 to 2 emails? It means that using my 2-3 different email addresses, or जी जी, for example मैंने एक कंपनी का अकाउंट बनाया है, एक मेरा अपना पर्सनल है, so I'm thinking so it's better to lock in your keys for your whatever exactly. your email addresses. Excellent. जी जी, so they offer at least 3 to 5 at the moment each email. तो अगर आपके 2 email है, you get double. So it's just little insight basically on free version. दूसरा ये था कि जो आप बात कर रहे थे examples का भी, I'm part of the AI Wales का brainstorming session. उसमें जो आगे contributions हो रही हैं वो education में काफ़ी हो रही है. AI use कर रहा है एक बंदा, he's coming up with a startup in education AI. Basically, his vision is to reduce the pressure on teachers and educators to at least 70%. जो के teachers ज़्यादा time लगाते हैं reports बनाने में, lectures plan करने में. So he's working on a complete model of reducing, and AI will be working on their behalf basically. So that's one of the example. Second is I've used it for my AI chatbot for
my company and for my clients. So basically it's on a fun side. आप उसमें अपना data load कर देते हैं with products, and any question that they have, it answers it and it prompts you to book appointments. So I think that's very helpful. Are there some example library code or something of these type of a few examples? जी, I will go through all the examples. अभी मैं थोड़ा सा बहुत high level का वो high level देते नहीं, और important चीज होगी कि I really arrived at the San Francisco airport. Just as a follow-up after this session, if you can provide to all of us, maybe we should create a separate WhatsApp group. Provide us, some of these pointer link to these type of examples. We can go to a library or APIs, whatever those things. What you can think of very high level few things. I would appreciate that. जी, sure. अब मैं आपको examples दिखाना शुरू करता हूँ. For example, मैंने जो जैसा खालिद भाई ने कहा था about 5 चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे UK में entrepreneur business and content creation में जो AI use हो रहा है, जिसमें text to text है, text to picture है, text to video है, text to audio है, या obviously और जो खालिद साहब ने कहा जो audio and video mix भी हो सकता है. Now a small example how text to video I've used. My daughter, she's 10, she's British Pakistani Muslim girl, adventurous, and she's writing a small book about her magical adventure. Now this picture is being generated by AI. Now you can see the वो क्या कहते हैं, background of Muslim at the back. You can see her avatar as adventure. You can see British Pakistani mixed complex as well. And you can see that she's, mixed between Tomb Raider and Adventure Girl. And this is what AI has done with just few lines of my prompt. She designed a graphic design, color coordination. Now I went into how many prompts does that require? This is really impressive. This was I done in a 1 paragraph prompt. I will go through really? the prompts as well. I will go through this is what I'm saying. The future is going towards people will be hiring not AIs, but the ones who control the AI prompts, basically the ones who are the AI prompt engineers. So then I went on to, and I said, Hani is an intelligent girl from Cardiff, basically, and she's going through a secret door, and it designed the whole look and feel of this, traditional door. Castle. G. And then a time machine it created. And these are just very simple things that I'm saying ke text to image example. अच्छा, तो ये सॉरी, जो आप टेक्स्ट टू इमेज एग्जांपल जो है ना, सॉरी, तो मैं दिखा सकता हूँ. जैसे आपने ये किया है ना, एक एग्जांपल जो इसने दिए, तो जो मैं आपको दिखा रहा था कोलैब लैब के अंदर एग्जांपल आजम साहब, तो उसके अंदर सिर्फ ये जो प्रॉम्प्ट जो खुर्रम बता रहे हैं ना, तो उसमें एक पैरामीटर जो प्रॉम्प्ट था जिसमें मैंने कहा था कि व्हाइट हैप्पी कैट, so that's the prompt he's referring. आप उसमें डालें and it is going to generate the prompt picture. Yeah. I mean, I went into more detail because I wanted a bit more reality than I add the reality thing. I will explain in another example. So basically, this was one of the examples of how I've used it for personal use. Basically, that's text to image. Now, what we are doing is, let me show you the bigger picture. So basically, this is the complete agency database that we offer to our VIP clients. So as you can see, it's about March tak, it was about April, sorry, thousands से ऊपर platforms launch हो चुके हैं AI के, अब तो 2000 से ऊपर हो गए. Now what we done was we created a database with my team, and we thought, okay, different industries के हर एक की needs different. अनवर साहब ने भी कहा हर एक की एक different need है, different industries हैं, किसी को content creation चाहिए, किसी को chatbot tools चाहिए. तो ये for example अगर आपको marketing sales tool चाहिए कि आजकल sales automation क्या चल रही है, these are the top 10 AI based software platforms already launched that we have used. For example, daily workplace tools जो मैं बात कर रहा था productivity के लिए, Notion AI. Notion is an excellent, I'm sure most of you guys use Notion. They have integrated AI in that. That's these are all open source tools?
No, these are develop freemium kind of tools basically, but Okay. these are productivity tools in different things. So what we offer them is आप इनको यूज कर सकते हैं फ्री ऑब्वियसली टू टेस्ट आउट. अब खालिद साहब ने टेक्स्ट टू स्पीच की बात की थी. अब few of them I'm early investor in them as well. So when they launched, I invested last couple of years ago. तो अब वो काफी डेवलप हो गए एआई में. जिस तरह एक लिसनर है यहाँ पे जो पॉडकास्टिंग का है, रिजेंबल है, तो ये सारे दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टूल्स. अब जो प्रॉम्प्ट्स की बात हो रही थी ना, दीज आर द प्रॉम्प्ट्स. दिस इज वेयर द रियल स्किल ऑफ एचआई व्हिच इज ह्यूमन इंटेलिजेंस कम्स विद द एआई. चैट जीपीटी कह लें या आगे जितने भी AI based जो functions होंगे ना, you should be able to communicate with them. This is what is called prompt basically. So I've divided into, for example, जिस तरह था आपको Twitter की कोई वो लिखनी है, ideas चाहिए Twitter के ना, तो अब मेरा ये slow है लेकिन तो basically these are all the all you have to do is just type this in a chat GPT. I'm looking for Twitter thread idea with जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका सब्जेक्ट है, ideal customers जो read करेगा, subject, and it will give you, and you can write in. I normally tend to write top 5 ideas or trends. So we have actually tried most of these Twitter trends and they work. These are called prompts. These are very excellent. Amazing. The way you have described it, very amazing. These are So, basically are you going to be sharing this with us? No, I will share some of it. Yeah, but this is good. Right? A good This is your proprietary. This is what you're developing. Yeah, exactly. So I can share some of it depending on what industry or what is your need basically. क्योंकि कईयों को copywriting and not everyone needs it. But in content creation, copywriting is the most important thing. तो अब research करना है, blogging करनी है. This is one liner and this gives you a really good answer as well. Research. So you're not wasting time training your AI. It's already there basically. Email writing, ये तो perfect example थी. मैं आपको एक fun bit बताता हूँ. I've used this myself and we spend a lot of time. तो मेरा भाई है, cousin है basically, मामू का बेटा. Just last week I was in London. So he's a business consultant in Lloyd's Bank. Promotion उसकी नहीं तो वैसी बातचीत हो रही थी तो कहते खुर्रम भाई मेरा तो सारा दिन ईमेल लिखने में निकल जाता है. मैंने कहा तू अभी भी ईमेल लिख रहा है? Like, you know, you actually, he said, yeah, Khurram bhai, because he's from East London. So he's like, Khurram bhai, I have to think of every single line, be polite, man go, okay, what is your job? So he said, I'm a business consultant for Lloyd's TSB and my email will be, basically I'm sending onboarding email, welcoming to new clients, asking them. मैंने कहा okay, चल मुझे लिखने दे. तो मैंने वहीं पे बैठे it's on my mobile basically. तो मैंने उसको prompt लिखा, business consultant, I want you to act as a business consultant for Lloyd's TSB Bank, who will be welcoming business clients in opening an account, and these are the requirements to open and basically वो लिख दिया था. Believe me, usne, while I'm speaking to him, start typing the chat GPT. You know how cool it looks when I start creating the email. And he was bamboozled. He said, Khurram bhai, you just done it while you're speaking to me in 10 seconds. I said, yeah. He said, so I can do all that in 1 hour, the full week's work. So itna usko, perfect example थी, एक business admin को उसका इतना काम हो तो उसको, this is what I was telling him, कि go back to your banks, this is what they will be looking into. They won't be looking into admin and all those things, but they will be looking into consultants who can control the AI and productivity basically. तो अब Khurram, sorry to interrupt you. So time, just checking time. So I just going to give some time to Kashi as well. हाँ, मैं 3 एग्जांपल्स और मेरे पॉइंट्स थे. एक ये है कि Amazon, which is a huge thing in Pakistan, English is a huge problem. I think Pakistan में Amazon prompt AI बहुत यूज कर सकते हैं to list their products, to write the heading, to write the description of it,
to write the emails and reply. This was the huge problem when we were talking about running the workshops in Swat, when we were running the workshops in Balochistan. They all had the huge problem कि अगर कल को खुदा they can sell it, but जब कोई problem होती they can't reply back in English or anything. This will be a huge thing if they integrate in Amazon, Etsy, or anything like that. And we have used it ourselves for product description. This one example. Second example was a fun example. Meri jo book hai Amazon pe, I've created a little introduction about Khurram Khan and branding. तो आप जो भी उससे पूछें, it will search, जो खालिद भाई ने बात की थी, it will search my PDF book and it will answer you through that branding. So basically it's like Dr. Azam used to joke, how can we multiply? So basically it's like multiplying me and you speaking to me anytime through that chat bot basically. So that was a fun example. Inshallah, I will work on last but not least, which is amazing. Last week I started working on for our outreach connections for any agency or any work. Is called one of the early investors again. It's a Silicon based company. उन्होंने क्या किया कि basically I create a video, small example introduction, welcome, अस्सलाम वालेकुम, या English में कह लो, welcome Yousuf Mamsa, तो thank you for reaching out to us. तो कोई भी मैं message करूँगा and then जो भी मेरा database में नाम होगा, it will be the same message, but अगर मेरे 100 different names हैं, जैसा यूसुफ हो गया, काशी हो गया, अनवर, खालिद, डॉक्टर आजम, सईदा, हसन, it will generate the text and the voice in my voice same and change the name. So I don't need to record 100 and it has done it in 50 seconds, 100 videos, and then send the email to each person accordingly. Yusuf ko Yusuf ka message gaya email ka with the video, Kashi ko Kashi ka jayega, and I've actually seen it, it done it. And so outreach automation was amazing, which takes weeks, is done it in an hour. So this is the huge thing which is from my side. Like I said, these are a lot of prompts. Facebook ad copy, agar aapko Facebook ki post banani hai ya ad kuch karna, I'm looking for a Facebook copy that will showcase the unique personality, ye wo sara kuch, and it will create copies. You always write top 3, give me 3 copies. So it will give you 3 different copies. I always add. And you create all these cases. This is the ones you created or you collected? Yeah. We created some, my team collected as well. I always add add the British humor. I always add that. So that takes it, that as the bit of an element, human element. So cultural element jo aap baat kar rahe the, for example, someone is Balochi, Sindhi, Pathan, Bengali, you can add that as a prompt in the ad, that add a bit of a, you know, I always add a bit of a British humor. And then that takes the script to a different level. Covered 10 points. Yeah. Sorry. Let me intervene. Yeah. Let's make this more suspenseful. So let's cut off your presentation right now. और yeah. सवाल होंगे तो हम आपसे करेंगे. We'll no problem. Back to you. So Khalid, can you go ahead and start with Kashi as well? Yeah. So Kashi, so आपके लिए भी वही exactly what you use for AI mostly, and any case study or example that you can share with us. So welcome everyone. By the way, great. आपका demo भी बहुत अच्छा था. Introduction and Khurram, a lot of great tool, man. So I'm really impressed the information that you have shared so far. Right, it will be really good to kind of give a short version, summarized version, some of the getting started kind of stuff for the Aspire member. I think that will be great. What I use for the AI perspective, so I've been doing a lot of research and keeping up onto the all the stuff that Khurram and Khalid talked about. So ChatGPT, as Khurram said, I don't even write emails and those things anymore. Even my work, any Slack responses, any executive reach out, any call out, shout out that I do, I write my draft, right? And now imagine this is what's happening. My boss actually asked me now to review his draft to me. And now what I do, I go to ChatGPT and I do the prompting, right? So it all depends on how you prompt the ChatGPT, what Khurram was saying. So you say, okay, act like this. This is the situation. This is my draft. This is my tone, right? And now rephrase it with this empathy, this style, and this thing. When you provide that kind of information,
then it comes up with this. And it will not be a perfect, to be honest. You still have to review it a bit. You still have to do the grammatical check or some of the wording change, but it will get you like 80% there. So you become very effective in short amount of time and do there. One of the very interesting use case that Khalid, you showed, and I don't know if people, you guys watched Google I/O yesterday, day before yesterday, there was Google I/O. What Yes. they right? So they released the Google Universal Translator. That's the thing they released yesterday. So what Khalid was showing you in that demo that translate Urdu video to English right there, this is what they were showing, that they can have any video by any person in English translated to Spanish with the same in real time with the Google Universal Translator. One of the use cases, I was trying to do a POC, which just when I saw Google I/O, I'm like, it's making my life easy. I wanted to take content like we are doing right now. So this conversation, right? We are having a great meeting, and as a topic of our learning, the AI, and like Anwar Bhai, and you guys get about angel investment. It's in English. We feed it, we get it translated to Hindi and Urdu, we get it translated into Spanish, right? But one thing I wanted to keep it, remove the robo voice. So there is another AI by Microsoft, which you can say 3-second sentence, it learns your accent and your sound, right? So now when you translate it, it will be either by you in your accent talking in Spanish. Wow. Not the robo voice, right? Not any other synthesia voice, synthetic voice. It will be your voice, but in a different Spanish, English, or Urdu and all those. And it will be translated. So we can use the same content and double the reach. Why it is important? Mr. Beast, if you guys don't know, ask your kids, they will definitely know Mr. Beast. He's one of the top YouTuber. It will be the one, I think, the first billionaire YouTuber there. He spent millions of dollars to translate his English videos into Spanish. And Spanish is the channel, is his second most revenue generating channel. When he translated it, it actually took him to the next level. Imagine the millions of dollars he spent to do the translation and all those. Now you can do with $20 subscription or $50 subscription and do the content reach from that perspective. So that is one thing for me. If every day, even my kids, they were doing Toastmaster, right? He said, I need to write a speech. Right? I'm like, okay, I gave him the ChatGPT. I'm like, now you reducing the topic, you're becoming more efficient. It's not replacing human, but now it's becoming more efficient. I said, this is how you prompt, this is the topic, get some idea, then write it up. Then you write it up and say, and you need to make it my own. Do from that perspective. So Kashi, this is really great. And one of the thing is, I left programming long time ago. So for me, if I want to do something without having to do the programming, is there a way that I can give instruction that will create the code for me? बिल्कुल कर देगा I will. While Khurram was talking, I was doing the same thing what you just asked. So I saw Khalid use the Colab. I created a blank Colab. I went to ChatGPT and I said, give me a Python code. I would do the text prompt and generate the text for me. It gave me all the code. I just copied that code into the Google Colab. Exactly. Wow. Excellent. So the only thing I need to do then just plug in my key and get the code from excellent. I think the other thing is, I think the one thing is which is missing again, will prompt. You need to know how to ask the right person. Yeah. That's good where question. the HI, एक the दो human example दे दो या comes in. एक दो example दे दो Khurram. खुर्रम की चीट शीट निकाल लेंगे ना खुर्रम से चीट शीट निकाल वैसे Anwar sir, this is Shah. You can write the chat bot and he can write all the prompt for you as well. Yeah. So I will share this. By the way, and one of the cases that we're doing is we're creating videos on some deeply technical scientific topics, space topics, whatever. But I think we're also translating. But to translate that, creating this in Urdu is a big job. We need to have people who really understand the scientists who understand this. So I think this is a great way of taking these complex topics and create Urdu versions of it. बल्कि आजम जो चैट जीपीटी जो है ना, अगर एक पैराग्राफ आप लें, वो उर्दू में ट्रांसलेट कर देता है. आप उसको कहो कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू कॉलन और वो दे दो और वो आपको एक
पैराग्राफ, अगर पूरा पूरा मजबूत दोगे तो नहीं करता, लेकिन एक पैराग्राफ करते करते वो कर देता है. Yeah, So that's that's pretty easy. अनवर साहब थोड़ा सा मैं जीएन शाह को थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, if you don't mind. बिल्कुल 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 सही. Really Khalid, amazing. Khalid Everyone में else. अच्छा सॉरी, बिल्कुल. go ahead. हाल में दो चीजें एज एग्जांपल शो करना चाह रहा था, if it's हाँ, okay. yeah, go ahead. The Google Translate तो मैंने बताया, जैसे खालिद अनवर भाई बोले prompt की, right? So we started doing an experiment. तो हमने 3-4 दोस्त थे, हम लोगों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट शुरू किया. We created a fake Twitter account, we the humans, right? Simple, right? And we said, if how you can help a small business to get the social media present and get their more customer and awareness, right? तो हमने एक फेक अकाउंट क्रिएट किया है दोस्तों ने. अब वो चैट जीपीटी उसने यूज किया, मिड जर्नी यूज किया, और मिड जर्नी की वजह एक्चुअली स्टेबल फ्यूजन एक और है मिड जर्नी जैसा, उसकी एक पे आईफोन पे डिफ्यूजनेट्रॉन. तो उसने क्या किया, he started giving the prompt. So he said, create me a woman with this background with DSLR 7.0 lens, right, with that blur. So when you give the camera information, it already knows how the background and everything should be, right? And then it created the code from Chat GPT. The best way to cheer yourself is to try to cheer someone else up. So he's putting the code with the picture and seeing what the usage look like. And you can see 1,000 people engagement from there. It's getting engaged. He already got within less than 2 weeks, I think less than 2 weeks, 635 followers. Wow. He got. Excellent. Right? From that perspective. Similar thing I follow on the TikTok. There's another account, Dev Nas. What this guy's created doing is so awesome. I don't know if it can play the video, but I will just show the screenshot. It actually now what this guy is doing is getting Islamic stories from ChatGPT or whatever you call it, right? Get the Islamic story, whatever the Islamic stories are. It created the avatar. I'll show you here. Here the avatar, graphic avatar like the picture, right? And then like this one. Okay, this is the old person there, and he's using robo voice, feeding the whole story. That avatar is talking and narrating the entire story of Islamic story on this handle. And it's getting all the likes and all those kind of stuff. So those are the things that are happening, how you can, socialize and use all these products. Amazing. Excellent, Kashi. So these are all amazing thoughts. I think due to the short of time, हम लोग और इनसे नहीं सीख सकें, काशी से और खुर्रम से. और इंशाल्लाह अगर जीएन शाह भी बैठे हुए और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एआई में काफी काम किया हुआ है, अगर वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें. If you give me 2 minutes. Sure. First of all, amazing. All of you three did a great job. Thank you for sharing your experience. I just want to tell you guys, as a software company, development company, we looked at GPT and the other tools as well. We actually has developed some tools. You don't need to work on the prompt. And those tools help developers to write test cases, unit tests, linear cases, 100%. We actually eliminated our test team 70% by using ChatGPT. We have built the tool, and those tools we publishing June 1st to all of the public. They can use it as well. You don't need to your proprietary tools. That's amazing. Yeah. These are your tools, or these are your tools, Jian Shah? We built that tool, and now we're giving away to free to everyone. They can use it. You just right click in your code, tell to generate a test case, unit test, and even though different framework that you wanted to do it, you can do it right from there. So we made it easy, and we as a company, 70% saving time on the development side. So we look, so these are the tools that people are using and all those prompts and everything. We are creating a wrapper on the top of the prompt and make it more easier for anyone who can use these tools in a daily life. So these are one of the test cases, and I'm share my white paper going to publish on June 1st as well. So I will send to everyone, and you can share with any developers. And by the way, it works with any programming language. It doesn't matter what you're using it. You can do it, and you can generate test cases for all different variety of frameworks. Wow, good. शुक्रिया बहुत बहुत जीएन शाह अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का. कोई और जो है पार्टिसिपेंट? दोबारा कहूंगा खालिद, हमें एक ये एआई का ग्रुप क्रिएट कर दें व्हाट्सएप पे, तो ये सब चीजें शेयर हो सके तो बहुत जबरदस्त होगा. I think so. This is amazing, but I've seen Sayyeda's hand raised. She is
patiently waiting, and we are. Oh, You sorry, must give a chance. we didn't see that. Assalamualaikum everyone. I just had a couple of questions. So I was fascinated with all of this, and I know there's a lot of conversation that's going on. So I've sort of dabbed into it a little bit. कल मैंने अपना पहला account खोला था ChatGPT का, and I sort of got it to do me an email, which I was absolutely astonished with the results that it came up, because there were a couple of sentences that I was struggling to put together to articulate, and it did so beautifully for me. But मुझे ये पूछना था आप लोगों से, the experts here in the room, कि ये जो prompts हैं, I'm just trying to understand कि initially I was thinking कि ये जो information आपको throw कर रहा है, like I wasn't being able to work out what is the difference between a search engine and this. राइट एक तो ये मुझे थोड़ा सा कोई आइडेंटिफाई कर दे, दूसरा ये है कि ये जो प्रॉम्प्ट्स आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि इनिशियली मेरे पास लाइक आई हैव अबाउट hundreds of research papers in the industry that I work in, and सबके थोड़ी चीजें मुझे चाहिए होती हैं when I'm putting a report together or I'm putting a proposal together. तो मैं ये सोच रही थी कि मैं सारी रिपोर्ट्स को इस पे फीड इन कर देती हूँ अपनी जितनी भी हैं, और फिर उसको बोलूंगी कि वो थोड़ा सा हमें to create an understanding of what my organization is about. Is that the right way to do it, or is it just asking questions? Because I'm थोड़ी सी confused हो रही कि is prompt basically just asking questions? Okay. If anybody can answer that. Sure, why not? Anybody wants to take on, or should I answer that? Okay. So इसमें सिंपल सा जवाब ये है सैयदा कि आप जो गूगल सर्च इंजन है, तो गूगल सर्च इंजन में जाके आप क्या करती हैं, आप सर्च के लिए टेक्स्ट टाइप करती हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको खुद पढ़ना पड़ता है, वो आपके लिए कोई पढ़ के नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप वही चीज आप चैट जीपीटी में करें तो वो पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन खुद आपके लिए इंटरप्रेट करके दे रहा है आपको। तो इसमें ये आपको फर्क नजर आया। तो इसका मतलब सिर्फ वो गूगल ही नहीं है, गूगल के अलावा उसके पास बहुत सारे और किताबें हैं, बहुत सारी सारी रिसर्च है। इवन मतलब आपको पता है कि ये चैट जीपीटी को डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल गई है, वो डॉक्टरेट भी पास कर चुका है, एमडी की भी डिग्री। तो एग्जाम्पल तो ये कि उसने सारी किताबें पढ़ी है। दूसरा सवाल ये है कि जो आपने बात की है कि आप जो चीजें उससे पूछ रही है प्रॉम्प्ट के जरिए, तो उसमें आप क्वेश्चन है बहुत सारी, इसमें तरीकेकार है। आप उसमें अपने रिसर्च पेपर को डाल दें, वो समराइज करके एब्स्ट्रैक्ट तक लिख के दे देगा, यानी कि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसे इस बात का ख्याल रखिए कि जो चैट जीपीटी है, जो भी चीजें आप शेयर कर रही हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, it's going to be reused for other purposes as well. So you have to be very careful what you are asking and what you are sharing with ChatGPT or any other AI tool. Khalid, I just want to add one thing, Saida. The ChatGPT based on the historical data, it does not give you the real-time answer, versus search engine will give you the real-time answer. So if anything came yesterday, search engine may pick up that as well, but ChatGPT will not pick up that item. That's correct. Thank you. Thank you, James. So ChatGPT goes up to September 2021 right now. Time check. That is correct only till now. With the new update this week coming from OpenAI, it will have the internet browsing capabilities. अच्छा, यूसुफ का टाइम के बारे में बता रहे हैं कि 3 बज गए। यूसुफ, सॉरी, I want to do a quick time check. अभी midnight हो गई है पाकिस्तान में, so we will be online. जो रहना चाहते हैं वो रहें, please. We'll continue conversation, but those who have to drop off, we understand. So thank you very much. लेकिन let's continue if you have questions. Khalid, please go ahead. Sorry, कोई क्वेश्चन कर रहे थे? सिद्रा, आप क्वेश्चन कर रही थी? No, I finished. Thank you so much. Thanks for that. So I have a question. In fact, I may have to leave soon. I have a thing, but what Khurram mentioned, कि जो है, you get your emails and get your keys done. So if you please help us do that. That's, I think that's a really important point. If you can share that in your WhatsApp group, I'll do that. No worries, खुरम, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप शेयर कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आजम साहब, ऑनलाइन भी अगर आप कहें, और चैट जीपीटी से भी आप पूछें तो बहुत सारी चीजें आपको उससे भी मिल जाएंगी। No, don't we have to create to set up a chat GPT first? I think he's saying that. Yes. Oh, okay. The key. Open the account with OpenAI and That's right. how to get the keys. I think एक छोटा सा step by step guide बना ले, 1 pager and share it with the group. If you can share that, that will be useful. I think that would be very helpful. Very helpful. 1 pager step by step OpenAI खोलें, उसमें यहाँ करके email कर लें, आप register करें, मोबाइल डाल दें और फिर कैसे की बनानी है वो सारा ना।
I would also say, I think this is, first of all, very, very interesting and extremely valuable session. And I think you experts there should form a group within Aspire, or, I mean, you can offer the services together and help a tremendous amount of, so I think if I have any, for sure, any AI questions, I know who to contact now. So yeah, create this group and the leaders in the group who are. I completely agree with Azam. Just one question I have for Shah. The tool that you guys have created to really cut down by 70% time in programming, are those Testing, tools? Are you planning to testing? Testing, I see. Okay, are those tools that you're obviously making available to OpenAI? Yeah. Are you planning to monetize in future? No, or should it's free. It's free. so we can share that thing thing to as many as startups as possible as well, right? Yeah, June 1st is going to be available for anyone. It's going to be free because underlying tool is the ChatGPT. Okay. Thank you, Shah. That is a great initiative for the free open source world. Aziz Khan, आपके हाथ अपने क्वेश्चन है कोई, please go ahead, ask a question. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, खुसूसन खालिद साहब, खुर्रम साहब और शाह साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे फ्रूटफुल, अब चूंकि दुनिया वाकई में ग्लोबल विलेज है, तो मैं देख रहा हूँ आजम साहब अमेरिका में बैठे हैं, मैं गिलगित के एक कोने में बैठा हूँ, लेकिन वी आर इक्वली बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंटरनेट। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सजेस्ट ये कर लूँगा कि वी नीड टू अरेंज, आप कुछ और ऐसे सेशन जरूर अरेंज कर लें। दिस इज समथिंग जो हम जैसे लोगों को भी एजुकेट करने के लिए यकीनन कारआमद साबित होगा। मैं एक बार फिर तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बदर गिलानी साहब, क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बहुत अच्छा और बड़ा जबरदस्त सेशन। Just one comment, especially about generating code from ChatGPT. It's very good. अगर आप अगर इसको use कर रहे हैं, लेकिन अगर if you're using it for corporate use, make sure that there's no injection, क्योंकि there might be possibilities of injection in there. तो ये ना हो कि आपका कोड जो है तो insecure हो और उसमें already कुछ चीज बैठी हुई हो future के लिए. So just that comment. Point. That's good. So there's a lot of other aspect as well. So we ethical aspects भी हैं इसके अंदर, अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कल ChatGPT वाले जो हैं वो sorry OpenAI वाले कांग्रेस में थे, US कांग्रेस में पेश हुए थे. So if you guys know about it. So there are a lot of concerns. I think there's AI. Did they use ChatGPT to get the answers in Congress? Yeah. So basically एक वीडियो शेयर की गई है सेनेटर की अपनी आवाज में, that was produced by the ChatGPT. So it's really the moral issues out there, which is, I mean, someone has to take care of it. So by the way, just one more feedback. We have tested Google Bard as well as ChatGPT, and we found Google Bard is much better than the ChatGPT. Even though, by the way, API, the everyone who using an API today is ChatGPT 3, not 4. Is going to be released soon. So one other comment I would make is the illusional effect that you get from ChatGPT. So it's really important that whatever comes out as an output from ChatGPT or any other of those opinions, it's better to check it, read it, confirm it. Human at the end of the day still makes a better decision whether it's right or not. And you don't want to communicate something that gets generated, but it's a misleading information in there, which is created by AI. To add to that, anything to do with content creation, email writing, blog, anything like that. Like I mentioned earlier, the AI plus HI, which is the artificial intelligence plus the human intelligence. So yes, take it to ChatGPT as a very intelligent, resourceful assistant. But you still have to check it before you send the email to anything as well. So. Absolutely. So I think at the end of the day, what I'm hearing is this. I just want to sign off. I have to go, but I just want to say I think very soon we should change the name of artificial intelligence to humans. क्या कहते हैं, you know, endangered superhumans species. We are using in this industry as superhumans now.
They have the Exactly. ability I think to, that's what I was going to say, that it's Yeah. really should not be looked at as going to replace humans. It's going to empower humans and make Yeah. them superhuman. In This the is the industry, very we key call it aspect of it. superhumans nowadays. Yeah. Outstanding sessions. Sorry, I have to log out. Thank you so much. All right, guys. इजहार आपका क्वेश्चन था, इजहार का क्वेश्चन था यहाँ जी वन क्वेश्चन खुर्रम साहब से कि चैट जीपीटी का जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऐप है, उनका यूज भी बिल्कुल इसी तरह फ्री है जिस तरह आप साइट पे हम यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप नहीं थी, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था ऐप में। तो बेस्ट चीज यही रहती है कि अगर आप वेबसाइट को सेव कर लें होम पेज पे ना, वो बेस्ट रहेगा, अप टू डेट भी रहता है, क्योंकि ऐप तो फिर अपडेट करने में मसला होगा, स्लोज डाउन एज वेल। वेब ऐप टाइप की नहीं होती आपका, आप उसको आइकॉन एज जी हम यूज करें जस्ट एप्लीकेशन की बात सही है। थैंक यू। अच्छा, जी एक चीज हमने डिस्कस नहीं की है, क्योंकि एनीथिंग विद द apps at the moment, they are freemium packages, so they takes you to ask for money. Same with the text to pictures, text to video जो apps है ना आजकल, तो it's Yes, best exactly. to register with the app application cloud based और उसको home screen पे आप अपने वो कर लें। जी जी थैंक यू जी। अच्छा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, चूंकि अभी इतना टाइम है आप लोगों के पास, सब लोगों के साथ। एडॉप्टिव लर्निंग जो है आजकल जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए है, तो किसी ने अभी तक कोई ऐसा काम किया हुआ एडॉप्टिव लर्निंग में यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खुर्रम या जीन शाह? जी खालिद भाई, मैं क्विकली इसमें आपको ब्रीफली बता दूं। जैसे मैं बता रहा था कि फ्राइडे मॉर्निंग्स आई एम पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स का जो है वेल्स में ना, वो एआई, उसमें एक लड़का है, ही इज स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो इस पे काम कर रहा है, एजुकेशन एआई, बेसिकली हाउ इट इज बैक्ड बाय एआई। तो वो उसका कहना ये है कि वो 70% रिड्यूस कर देगा मैनेजमेंट का वेट, एंड प्लस इट विल इंक्रीज एटलीस्ट 30 to 40% जो ए लेवल्स के जो है ना, जीसीएसई एंड ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड नॉलेज, उसका ये कहना है। खुर्रम इसके बारे में शेयर करना, कौन सा बंदा है और कौन सी कंपनी जी है, अभी वो, हाँ वो अभी वो पिच हमारी होगी, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द पिचिंग द सेशन एंड शोकेस, तो वो करेगा, तो मैं उसको कहूंगा कि बिल्कुल जब वो गोरा है तो शेयर बेसिकली, करना। हाँ गोरा है बेसिकली, तो वो इस चीज में काफी वो कर रहा है, इज गोइंग इट्स ऑलवेज ऑल इन। गुड टू लर्न, इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न। इसके अलावा जो है, ये किसने सवाल पूछा था, इसके अलावा आईक्यूरा जो है, नईम सैयद की जो कंपनी है, वो भी अडैप्टिव लर्निंग के ऊपर भी बनी है, और they've been using for O level, A level for 2 years now. Now they are integrating with Chat GPT right now as we speak further. So that has been, that whole platform, is based on adaptive learning. Adaptive learning. Okay, that's great. There are, just to add, there are 8 tools I've shortlisted. I will share it in the list. वो इसमें है एजुकेशन असिस्टेड एआई में, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो ना, जिसमें है लाइव रिएक्टिंग एआई है, कैक्टस है, माइंड स्मिथ है, ट्यूटर एआई है, क्विज गेको है, इस तरह के 8 हैं। जबरदस्त जबरदस्त। यार ये मैं अपनी फ्लाइट मिस ना कर दूं, मैंने चेक इन कर लिया वगैरह वगैरह, लेकिन सिक्योरिटी के बाहर बैठा सिक्योरिटी, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मैं इसमें एक और प्लीज रेकमेंड करूंगा यूसुफ एंड खालिद एंड खुर्रम, कि यही वाला सेशन जो है एक दफा और किया जाए, जो बड़े ऑडियंस को बुलाया जाए, इसमें जो है ना 100-200 पीपल मौजूद होने चाहिए। एवरीबॉडी, एवरीवन वुड लर्न, लाइक इट, यू नो, we had about 21 or 30 people on this call. In fact, we should benefit. I think equally we should encourage to watch this video recording as much as possible. But then we can, I think this is a very fundamental of a learning session. लेकिन इसके लिए जो मैं रेकमेंड करूंगा अनवर साहब, बिल्कुल जो बहुत अच्छा आइडिया है। असल में हर काम के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 hour इज नॉट सफिशिएंट। अगर मिसाल के तौर पे जीन शाह के एग्जांपल ले लेते हैं, अगर वो टेस्ट केसेस अपने दिखाते हैं, तो उनके डेमो के लिए एटलीस्ट ही नीड्स सम टाइम्स। और अगर हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं, तो वी हैव टू डिसाइड कि हम मतलब सेशन, मल्टीपल सेशंस वी नीड टू डू इट इन ऑर्डर टू get to the I think clearly thanks to Yousuf, who was pushing all of us, and he reached out to all of us for to make this happen. I think initially मेरा यही था कि first value for everyone's time,
जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, what is the outcome, हम फ्यूचर में क्या करेंगे। दूसरा ये था कि इंटरेस्ट कितना है, we all are passionate about it. There is a huge new industries creating, and I think countries like Pakistan who lack the digital age and all that, I think they can really benefit in the future with this AI industry, अगर वो उसमें if they can catch the wave. उसमें दो चीजें मैं कहूँगा। एक तो पाकिस्तान जो है ना, one of the top 5 I think is in freelancers. तो हम freelancers communities को कैसे educate करें ताकि वो ज़्यादा productive हो जाएं और ज़्यादा efficient हो जाएं, number 1. Number 2, software companies in Pakistan or startups who also do product development, software and whatever that thing, and how they can benefit from this thing, and they can learn forward and make it more efficient. So I think this is more at the angle of how we can help Pakistan. But your question, how would we benefit people who like yourself, Yousuf, and everything? I think that's you guys need to come up with ideas that Khalid, Yousuf, Kashi, yourself, how you like to benefit from this thing. I think that should be we should explore those things as well. Gee, I think exactly this is what the idea is, that how we can help each other as a win-win and help Pakistan as well. Inshallah. I think that's a great message. How we can help each other, how can we benefit Pakistan? That's our goal and objective. Inshallah ta'ala, we're all moving towards that. I think 3:15 होने को है हमारे टाइम के मुताबिक, so 1 hour 15 minutes. So Yousuf, do you want to have a concluding statement and then we can close our session? Yes, most definitely. अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद बात कर रहा हूँ। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने हाथ उठाया हुआ था, फिर मैंने नीचे कर दिया, मैंने कर दिया, रुक गया। I just wanted to share my experience. आप लोग AI की बात कर रहे हैं, this is more centered on chat GPT, मगर मैंने AI जो है ना, अगर आप वैसे उसको देखें जो टाइम सीरीज को और इन चीज़ों को एनालाइज करने का, तो definitely I started with chat GPT to asking it, can you act as a financial advisor or financial analyst, generate a code, write Python code to do this and that. So I have created a simple set of routines. I can predict the stock prices 60 days out. And you train the model and you know exactly 60 days out what is it doing. We probably need to talk about it someday, some other time, in some other forum or whatever, but they are very good predictions within plus minus 2%. So Naveed हमारे साथ share करें, फिर हम we'll figure it out to put together a commission model for you. Yeah, ये वाला सेशन तो पहले होना चाहिए, सबसे पहले. Yes. अनवर भाई आप चेक इन करें फ्लाइट सिक्योरिटी से, you don't want to get into trouble, eh? That's the way money talks. अनवर आपकी बात कट गई, सॉरी, अब दोबारा कहें. मैं ये कह रहा हूँ, that's the way money talks, but anyway this would be one of the most important. Anyone of us always like to invest, right? So it would be good to double check with this kind of tool whether we are on a good path or not, and then we'll make a good decision accordingly. But if you will, sure. ठीक है, मेरा पड़ोसी जो है, he is a financial analyst, तो उसका ये आइडिया था, मैंने कहा नहीं मैं तुम्हें बना देता हूँ, ये हम इस तरह ये करेंगे, we are predicting stock and he is taking stock of all these sectors and everything. So this is handled by professional. I'm just acting as a quant. सही, आप उसको बिल भेज दें बहुत बड़ा सा और हमें मुफ्त में शेयर कर दें. बिल्कुल. Naveed bhai, thank you for sharing. Inshallah, I'll connect with you and maybe we can do a focus session on yours, focus session on GN Shah's. And thank you, GN Shah. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया share करने का. And we'll do a focus session on your solution as well. But big thanks to Yasrib for helping organize this. Big thanks to Khalid, Khurram and Kashi के बिल्कुल short notice पे they jumped on. Inshallah, we'll continue with this series as well. And those who have stayed so long, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. And inshallah. Thank you. Thank you, Yousuf. Thank you very much for leading this thing. And thank you, Yousuf. Thank you. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. Very helpful. Very productive. Thank you. Thank you for organizing this session. Thank you so much. Allah Hafiz.